Good evening, everyone. Warm welcome to your own platform. We call it as Exam Norm. I welcome you all in the next session of Finance Norm, where we are going to cover the finance current affairs for 24th and 25th of May. But technically, first we will be completing the report which we have started in the previous session. So let's get started with the discussion. I hope you all remember in the previous session we have started with the payment system report, which has been presented till December 2025. So payment system report is one of the most important report as we have discussed in the previous session. The reason behind this particular report is, or the importance of this particular report is that it plays a very important role. I would say as a very important role to provide data, to provide surveys, to provide reference for many of the policies which are going to be framed by most of the stakeholders involved. Now, if I talk about this particular report, ये जो report है, इस report में we have discussed that there are 5 chapters. First is the introduction, but technically we have covered the second chapter where we have talked about payment system in India. जहाँ पे we have discussed in detail what is the current status of the payment system in India, which is very important. Then we have comparison. We have done the comparison with 2021. Then we have went for large value payment systems as well as the retail payment system. और उसमें बहुत बारीकी से all the data has been highlighted in the previous session. It is highlighted in this class PDF as well. So don't worry. Major regulatory developments in the payment system in India, where we have discussed the 3 important master directions which has been introduced by RBI from the month of April to December, or I would say from the month of July to December 2025. अब हम आगे बढ़ेंगे and we will be talking about the next chapter, that is central counterparties anchoring market stability, that how these central counterparties are responsible for market stability, as well as we'll discuss कि कब ये central counterparties बने, and most importantly we'll discuss what are these counterparties. Then we'll move ahead and we'll talk about cross border payment, its regulatory and technological development which has been done as per the report, and in the end I will be talking about the payment system instruments. Sorry, we have already discussed the payment instruments, but with respect to payment instruments, I will be sharing the data of 2021 and 25, which you just have to read. उसमें 2025 तक का डेटा अगर याद रख पाओ तो बहुत बढ़िया, वरना एटलीस्ट बेसिक में से कुछ इंपॉर्टेंट जो पेमेंट सिस्टम्स हैं, आई विल मार्क इट डाउन, उन्हें याद कर लेना, बाकी यू कैन इग्नोर. ठीक है जी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन. So first of all, in the previous session, I made you understand what actually the payment system report is, what is the benefit of this particular report. Then we moved ahead and we discussed that it is aligned with the framework of Payment Vision 2028, and we have even discussed that it basically showcase the current payment system stats of the country. Then we did the introduction. After the introduction, we have started with the data, and specifically the data which I have written on the screen with this red color, or maybe I have marked the points in red color. They are only important. That is the only part which you have to remember. Rest you can ignore, as I have already striked off the data which does not need to be read, which is not required to be learned. ठीक है जी. उसके बाद अगर हम बात करें तो we have discussed the data with 2021 and 2025, and even we have discussed the data with respect to the retail payment system as well. फिर मैंने आपको 3 मास्टर डायरेक्शंस के बारे में बताया. द फर्स्ट वन वाज रिलेटेड टू पेमेंट एग्रीगेटर्स व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड. आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट द सेकंड मास्टर डायरेक्शन, दैट वाज authentication mechanism for digital payment transaction, that is additional factor of authentication. We have talked about it, and then we have discussed the third one, that is basically related to self regulatory organization for payment system operators. तो ये 3 RBI के जो मेजर डेवलपमेंट्स है दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन. अगर आपने पहले वाला सेशन नहीं देखा, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू गो बैक एंड चेक 21st to 23rd May सेशन. उसमें ये सारी चीजें काफी डिटेल में डिस्कस की गई है. नाउ आई विल बी मूविंग अहेड विद 4th and 5th चैप्टर. और टेक्निकली इफ आई से कि जो कंटेंट या डेटा या फैक्ट्स या फिगर्स इंपॉर्टेंट थी, दैट वाज फ्रॉम 1st to 3rd chapter, but the conceptual understanding which is really very important for your upcoming examination, जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन काउंटर पार्टी से, काउंटर पार्टी के कॉन्सेप्ट्स पे, काउंटर पार्टी के ऑपरेशंस पे, या फिर काउंटर पार्टी के एग्जांपल्स पे पूछा जा सकता है, दैट विल बी कवर्ड इन दिस सेशन. और याद रखना आज की डेट में ये सेंट्रल काउंटर पार्टीज वाला जो टॉपिक है, इट्स इन न्यूज बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ सर्कुलर्स, एन नंबर ऑफ
press releases which have been presented by RBI, काफी बार ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स का जिक्र किया गया और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स में दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज सेंट्रल काउंटर पार्टीज। तो सीसीआईएल के बारे में अगर आपने सुना तो आज अगले 15-20 मिनट मेरे साथ बने रहिए। सीसीआईएल से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में डाउट्स है वो सारे के सारे आज के सेशन में क्लियर हो जाएंगे, आई एश्योर यू दैट। ठीक, लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first is a central counterparty, or I would say the CCP, is a very important part of financial market system. Why it is important? So the reason is, let's say there are two parties, A and B. A is ready to sell a product, B is ready to purchase it, but this trade is not happening in the real time, or maybe the I would say right away transfer is not as such possible. So in that particular case, A and B will approach to a mediator, and that is C. So C will become buyer in front of A, and C will become seller in front of B, so that this trade can be completed. And this C is really very important in this entire trade because C comes up with a counterparty risk mitigation. क्योंकि अगर A और B ने लेट्स से डील की, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बट देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब या तो बी ने नॉर्म्स या बी ने अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं किया या फिर ए ने अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं किया, तो उस केस में द अदर पार्टी विल विटनेस द लॉस। बट इफ वी इन्वॉल्व द थर्ड पार्टी देन दिस लॉस कैन बी मिटिगेटेड बिकॉज सी विल टेक द गारंटी एंड सी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कॉम्पनसेट द वन हु इज गोइंग टू लूज और द कॉम्पनसेट द वन हु हैज लॉस्ट द funds or lost the instrument. So in this case, this means that after the trade is completed, CCP becomes buyer to every seller as well as seller to every buyer. So this process is called novation. Now you must be wondering, sir, after the trade is completed. So trade and settlement, they are two different aspects. For example, you are purchasing a share on the stock exchange. You made a purchase. That doesn't mean that funds will be directly credited into the seller's account, or if you are purchasing a share, that doesn't mean that share will be directly credited into your account. It will take some time, and this time in which actually the funds will be credited into the seller's account and shares will be credited into the buyer's account, that process completion is known as settlement, and this settlement is done if it is done with the help of a counterparty. That is the reason we say that counterparty role basically starts once the trade, once the contract, once the agreement is done, once both the parties are agreeing to the fact that yes, we want to complete this transaction. So it acts as a middleman. So the main purpose is to reduce counterparty risk. So counterparty risk is a very important, I would say, it's a worthy risk which we have to note down as a player in the market. तो उसे अगर आप mitigate कर रहे हैं, that is a good move. So by taking over this role, CCP helps to prevent the failure of one participant from spreading through the entire market. अब इससे क्या हुआ? तो मान लो कि अगर A ने B का promise तोड़ा तो हो सकता है B will be breaking the promise to C, C will be breaking the promise to D, D will be breaking the promise to E. So in this manner, from one loss or from one, I would say, risk, not risk, I would say from one event, the entire market is impacted. And just assume that this is an event of 10,000 crores. तो अगर वो 10,000 crore का event है, it will impact the entire market. It may lead to systemic risk. It may lead to a situation where entire economy can be under risk. It may lead to a situation of crisis, and the same crisis were witnessed in 2008 क्योंकि actually में banks, they were not doing well. Due to one bank, the other bank failed. Due to the other bank, the another insurance or other financial institutes, they failed, and due to which the entire economy witnessed crisis in 2008. And that was basically due to the transfer of risk from one party to another. But अगर मैंने mediator बना दिया तो अगर A और B किसी ने भी risk या किसी ने भी अपने promise को complete नहीं किया, then no worries, C will be there to complete the promise. That is a point. ठीक है, चलो. Now if I talk about CCP, before I talk about central counterparty, तो उससे पहले क्या होता था? So central counterparty से पहले, before central clearing became common, financial market mostly worked through the bilateral settlement. The way I said, A and B, they directly deal with each other without a central institution in the middle. So this created a web of direct exposures
where each firm has to manage the risk separately with every other firm in the deal. For example, A ने B के साथ डील की, देन B ने C के साथ, C ने D के साथ, हो सकता है B ने D के साथ भी डील की है या फिर E के साथ भी डील की है, F के साथ भी है, B is involved with G, B is involved with H, B is involved with I, B is involved with J. So in that case, B has to maintain the reserves to counter the risk which is associated with all the parties. In that particular case, it will be tough for B क्योंकि उसका सारा कैपिटल तो रिजर्व्स में चला जाएगा, उसका सारा कैपिटल तो I would say risk को mitigate करने में चला जाएगा, which is not fine. So it's better if there is a mediator, that there is no need to maintain the reserves, or the risk mitigation reserves are pretty low when the mediator is involved, which we call it a central counterparty, जो पहले नहीं था. So this system has several weaknesses. Counterparty credit risk was high. That's quite obvious. Operational complexity was there, as I shown you. Liquidity was used ineffectively. Ineffectively कैसे? सर A और अगर मैं इसी एग्जाम्पल में बात करूं, A owed 100 crores to बैंक B. तो बैंक A ने 100 करोड़ रुपए देने हैं बैंक B को, and bank B is responsible to owe the same amount, that is 90 crores, let's say, to C. Then in that particular case, A को पता है कि मुझे B को पता है कि मुझे 100 करोड़ आने वाले A से, लेकिन C को देने हैं 90 करोड़. Because there was no middleman involved, there was no counterparty involved, so the direct settlement cannot be done. So if the direct settlement is not allowed, set off is not allowed, then B has to arrange 90 crores regardless of the fact कि उसके अपने 100 करोड़ रुपए A के पास पड़े. And the another weakness was obviously lack of transparency, क्योंकि जब इतना वेब स्ट्रक्चर आपने बना दिया तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई. तो इसीलिए सीसीपी को लाया गया. अब सीसीपी आया तो उससे क्या बेनिफिट्स हुए? सो वन मेजर बेनिफिट इज मल्टीलेटरल नेटिंग. इसका मतलब क्या है? सीसीपी कंबाइंस ऑल द ट्रेड्स ऑफ पार्टिसिपेंट एंड कैलकुलेट्स वन फाइनल नेट अमाउंट टू बी पेड और रिसीव्ड. मतलब क्या कि सर ये बी पार्टी है, तो बी पार्टी हैज डन ट्रेड with multiple institutes. So in multiple institutes में C, the mediator, the counterparty is very well aware that C is liable to pay 100 crores. C is expecting 90 crores. So the net set off which B has to pay from its own pocket, that is 10 crores only. So this calculation is very important. Another benefit is risk mutualization. So CCP maintain a common default fund. तो ये जो risk है कि भैया कल को अगर कोई भी पार्टी इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट नहीं करती, सो दैट्स अ रिस्की अफेयर. बट दैट रिस्की अफेयर इज नॉट ओनली अ बर्डन ऑन बी, बट इट्स अ बर्डन ऑन सीसीपी एज वेल. सीसीपी विल मेंटेन द रिजर्व्स इन ऑर्डर टू काउंटर द लॉसेस इन द नियर फ्यूचर. CCP, they also improve transparency as well as standardization, because with the involvement of regulators, the transparency is done. With the involvement of regulated parties like CCP, it's easy to come up with standardized processes. So they also provide strong default management. If a member defaults, CCP handles the close out process in a controlled way so that market does not face panic और एनी सडन डिसरप्शंस. कि भाई अगर मान लो कोई एक पार्टी फेल भी हो जाती है तो सबको पता है कि कोई बात नहीं यार, मीडिएटर संभाल लेगा, और जब मीडिएटर संभाल लेगा तो हमें टेंशन की क्या जरूरत है? Everything will be fine. Everything will be fine. Everything will be fine because this middle party is maintaining the reserves to counter those risks. Is maintaining its own reserves to counter the risk. And why it is maintaining these reserves? Because it's charging a commission for this service. And if you're charging a commission, that's a business. And in order to earn profit, you have to counter the risk associated with your profit, and you are maintaining the reserves. अब आप सोचो कि सर इसे तो हर डील के लिए एक रिजर्व रखना पड़ेगा. तो मैं ये कहूंगा, अभी तो वैसे मैं और भी बातें बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इतना ही कहूंगा कि सी इज नॉट द मीडिएटर of deal mediator for only two parties. It is the deal mediator for hundreds and thousands of parties. अब मान लो कि अगर CCP ये expect करता है कि let's say the counterparty risk is, let's say, I'm just taking an example, it's 10%. If the total services provided by CCP is 1 lakh crore, it has to maintain the reserves अगेंस्ट 10,000 करोड़ ऑफ रिस्क ओनली. पूरे 1 लाख करोड़ के लिए रिजर्व्स रखने की जरूरत नहीं है. बट अगर सोचो सीसीपी ना होता, मतलब काउंटर पार्टी बीच में जो सेंट्रल काउंटर पार्टी है वो ना होती, तो अगर ये 10,000 करोड़ की डील है तो उस 10,000 करोड़ के अगेंस्ट
the reserves are need to be maintained by both A and B. So that was a burden. And for every transaction, you have to maintain the reserves to almost 10 times reserves was maintained by the involved parties. But now that reserve is only 1 by 10th, which is maintained by the mediator alone. I hope समझ आया होगा. Now I will talk about a term that is PFMI. This is a very important term. You must know this term very well. अब ये term क्या है, क्यों इसे इंट्रोड्यूस किया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है. सबसे पहले PFMI stands for Principle for Financial Market Infrastructure. मैं इस पे आऊंगा. उससे पहले CCP take on and absorb large amount of risk for the benefit of the market. CCP cannot be weak because if it fails, the damage can be very serious, and that is why strong risk management framework is very much needed for CCP. So they should be too big to fail. They should be too big to fail. ये ज़्यादा एजेंडा नहीं है सर, उनका एजेंडा है they should be too safe to fail. They should be too safe to fail. Right now, if I talk about the current scenario, these are 24 international risk management principles. So what are these principles for market infrastructure? These are the risk management principles which are ought to be fulfilled by CCP. So right now we have 24 international risk management principles which are issued by Committee on Payments and Market Infrastructure, that is CPMI. I repeat, Committee on Payment and Market Infrastructure, as well as International Organization of Security Commission. So they have collectively issued these 24 international risk management principles. They cover all kind of risk like legal risk, credit risk, liquidity risk, settlement risk, participant risk, operational risk, and transparency risk, which is involved with respect to central counterparty. Now, some of the important features are the first one, A and B. They have done a trade, now they have to get it settled down. So they went to a mediator, that is counter central party, and the counter central party will say, if you want to trade or if you want to make the settlements to me, it is possible only and only if you pay some margin to me. You pay some margin to me. So this margin is known as initial margin, which act like a security deposit against the future price changes, or variation margin, which is collected regularly to reflect current market price. इसे collect किया जाता है on regular basis to reflect the current market price. मतलब कि if you are thinking of trading of, let's say, 10,000 crores, then you are supposed to park 100 crores as a margin money with me. Then only I'll be allowing you to perform the trade. Then only I will be acting as a settling agent in this particular trade. Then liquidity standards. So liquidity standards require CCP to maintain enough liquidity resources. That means ये जो CCP है इसके पास अच्छे खासे liquidity resources होने चाहिए. In practice, they say that these resources should be able to cover the failure of two largest clearing members. तो जो आपके largest clearing members हैं, अगर वो दो largest clearing members फेल हो जाते हैं, उस केस में भी यू शुड बी कैपेबल इनफ टू काउंटर दैट रिस्क. इतनी लिक्विडिटी आपके पास होनी जरूरी है. ठीक है जी. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर काउंटर पार्टी रिस्क अराइज होता है, अगर मान लो एक पार्टी कंप्लीट नहीं करती ट्रांजेक्शन, देन व्हाट विल बी द फ्लो, कि कौन एक्चुअली में लॉस बेयर करेगा. द फर्स्ट कम्स द डिफॉल्टर्स ओन मार्जिन. तो जो डिफॉल्टर है उसने जो अपना मार्जिन दिए, दैट विल बी यूज्ड, एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी उसने पार्क किया फंड्स. मान लो एक तो आपने मार्जिन दे दिया 100 करोड़ का, और जब आपने ट्रांजेक्शन की, उस ट्रांजेक्शन के समय लेट्स से यू हैव मेड अ पेमेंट ऑफ 20% मोर. So this 20%, that is 200 crores, 100 crores your margin. So both will be utilized to overcome the loss. CCP own capital will be used because the skin in the game is very much required. अगर skin in the game नहीं होगी, तो सीसीपी को फर्क क्या पड़ेगा. सीसीपी इतने ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट तभी चेक करेगा जब सीसीपी को पता है कि अगर कुछ हुआ तो एंड ऑफ द डे मुझे रिस्क बेयर करना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ इट इज डन. सो फर्स्ट इज, अगर बी डिफॉल्टर है तो भैया बी का जो भी फंड इन्वॉल्व है उससे रिकवरी होगी, और उससे अगर रिकवरी नहीं हो पाई तो बाकी का जो रिस्क है दैट विल बी बेयर्ड बाय द सीसीपी इटसेल्फ फ्रॉम इट्स ओन कैपिटल. Now CCPs, they are regulated entities, that's quite obvious, and they are regulated by whom? Sir, obviously they are regulated by RBI. अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो ये जो CCPs डेवलप हुए, they have developed back
I would say their development start after 1990s. At present इंडिया में बस दो ही CCPs हैं. The first one जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. दूसरा है AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड. इसके बारे में हमने कम सुना है बिकॉज इसके जो ऑपरेशंस हैं दे आर प्रिटी लिमिटेड. इसके जो ऑपरेशंस हैं दे आर प्रिटी लिमिटेड. CCIL ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ARCL बस एक बार पढ़ना, जितना समझ आए बहुत बढ़िया, ना समझ आए इग्नोर कर देना. CCIL was basically created as a part of RBI's plan. In June 2000, a core group of experts was formed with representatives from RBI and many other organizations. And finally, CCIL was later announced in the budget 2001-2002. Since its establishment in 2001, CCIL has become major institution in the Indian financial system, and it has achieved strong netting efficiencies. Netting efficiency, which means it has greatly reduced the total amount of money and security that need to be settled. तो जैसे मैंने बताया था कि B अगर एक तरफ से पार्टी से incoming 100 crores है and it has to pay 90 crores, so this only 10 crores will be utilized to complete the payment, that is netting. अब इसमें मैं अगर कहूँ कि मान लो दो clearing members involved है, bank 1 and bank 2. Bank 2 is responsible to pay 1000 crores as day-to-day transaction which has been done by their customers. Bank 2 is responsible to pay, let's say, 990 crores. So in this case, CCI will step in between and CCI will ask its clearing members to just net off. That means 10 करोड़ रुपए दो, कहानी खत्म. 990 आपने देने थे, 1000 आपने देने, 10 करोड़ दो, कहानी बराबर हो गई. That is net settlement, or we call it as netting. So CCIL, it provides guarantee settlement in several segments. This include it provides guarantee in the government securities, market repo, tri-party repo, forex market transactions, rupee derivatives, as well as in cases of cross-currency settlements as well. This report also shows that settlement values in CCIL managed segments have grown steadily over time. तो भैया जो settlement values है वो improve हुई है over the period of time. That means it has become a good or a better institute in terms of its operation. CCIL has recently completed its 25 years that it was set up in 2001, and going forward, it is planning to expand more to the new products like bond forwards, non-deliverable forwards, and whatnot. Now coming back to AMC Repo Clearing Limited, as the name suggests, Repo Clearing Limited. Why it is so? The reason is that it was created to support India's corporate bond market, which is an important part of economy. We know that. Earlier expert group had recommended introducing tri-party repos in the corporate debt. मैंने बहुत बार आपको tri-party repos पढ़ा है. So especially tri-party repos in the corporate debt, when it was introduced on the recommendation of SEBI, it was required to set up a clearing counterparty. I would say setting up a central counterparty which will be responsible specifically for handling these cases or handling this particular type of trade. So it led to the creation of Limited Purpose Clearing Corporation, which was set or which was recommended by the working group set by SEBI. So an Limited Purpose Clearing Corporation, Limited Purpose मतलब आपका एक ही पर्पस है, ट्राई पार्टी ट्रांजेक्शंस को क्लियर करना. तो एक लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक इंस्टीट्यूट बनाया गया which was termed as ARCL, and it was set up in 2021 under SEBI regulation to provide clearing, settlement and settlement guarantee for tri-party repos, and that too incorporated. ये बड़ा important है. AMCR, or I would say ARCL, is involved in what? Sir, it is involved or it is responsible basically for tri-party repos in corporate debt securities. In simple words, I would say it was created to connect corporate debt holders and institutional lenders through a safer and more organized manner. Since July 2023, ARCL has gained strong market acceptance. Its tri-party product has grown rapidly. Daily trading volume have also increased. तो 2023 से ऐसा देखा गया they are doing pretty well. ARCL plans to expand into clearing and settlement of non-SLR debt securities and also to support products such as tri-party repos and over-the-counter trades in the non-SLR debt securities. तो ये सारे काम भी अब उम्मीद है कि फ्यूचर में ARCL will be doing it. तो कंक्लूजन क्या होगा सर? कंक्लूजन बड़ा सिंपल है that at same time CCP themselves they face serious risk because they concentrate so much responsibility in one place, but still they are managing their risk in order to counter the issues, in order to counter the
individual party to party counterparty risk, which is boosting the financial market, which is boosting the financial system of the country. I hope it's clear. It's fine. Now let's move on to the last chapter, that is the क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स. अगर मैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स चैप्टर की बात करूं, ये काफी लेंदी चैप्टर है, बट इसमें मैं तीन चार चीजें आपको बताना चाहूंगा, बस उतना ही पढ़ना. उसके अलावा रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन गो थ्रू विद दी पीडीएफ विच कैन हेल्प यू इन फेज 2, बट फेज 1 के हिसाब से जो चीजें मैं मार्क करूंगा बस उतना ही पढ़ना. सो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मेनली डिपेंड्स ऑन दी बैंक्स विच आर इन्वॉल्व, क्योंकि एक बैंक है इंडिया में B1, ठीक है. अब उसका एक कस्टमर है C1, उसको अगर पेमेंट करनी है तो फंड्स विल बी ट्रांसफर टू बैंक टू ऑफ customer 2 of bank 2 in some other country. It will be done with the help of a medium where the settlement is done. We call it as SWIFT, और आज की डेट में India has tied up directly also where the direct settlement is also done in some aspects in some specific cases. लेकिन cross border is always very important topic to be discussed. The reason is cross-border payments in India, not only in India, but cross-border payment globally. First problem with them is high cost. We have बहुत ज़्यादा charges है in order to perform this transaction, as well as if I talk about the time period to complete a transaction, settlement time period is also very high. उसको ओवरकम करने के लिए एन नंबर ऑफ इनिशिएटिव हैज बीन टेकन. तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, द फर्स्ट रीजन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल इंटरमीडियरीज. बैंक है, बैंक के बाद मीडिएटर्स हैं, मीडिएटर्स के बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलमेंट है, स्विफ्ट का पूरा आई वुड से द वेब इज इन्वॉल्व. उसकी वजह से देर आर सेवरल or multiple intermediaries, and since payment move through several banks, every additional institution, it adds processing time, it adds charges as well as operational check, जिसकी वजह से ये डिले हो रहे हैं और कॉस्ट बढ़ रही है. सेकेंड रीजन इज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन दे मस्ट फॉलो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स एंड कस्टमर ड्यू डिलीजेंस रिक्वायरमेंट इज नीड टू बी डन प्रॉपर्ली. तो जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स बीच में इन्वॉल्व हो गए तो उसमें वेरिफिकेशन चेक्स इंक्रीज हो गए, चेकिंग एट एवरी स्टेप हैज इंक्रीज, जिसकी वजह से डिले हो रहा है. द थर्ड रीजन इज रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन एंड टाइम जोन डिफरेंस. आपने ट्रांजेक्शन अभी की, वो तो ठीक है, लेकिन जब आपने ट्रांजेक्शन की वहां के बैंक्स दे वर नॉट इन अ वर्किंग मोड. जैसे वो ओपन होंगे दे विल कम इन द वर्किंग मोड, देन ओनली द ट्रांजेक्शन कैन बी सेटल डाउन. दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइम जोन्स. तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से G20 केम इन पिक्चर. तो G20 ने एक ग्लोबल रोड मैप बनाया कि सर कुछ भी हो जाए, वी हैव टू counter this high cost, we have to counter slow speed, we have to counter limited access, and we have to counter the lack of transparency. So at same time RBI ने कहा बिल्कुल सर G20 के हम साथ हैं, we will be doing that. और अब rapid technological innovation के तहत the payment system globally is trying to utilize as much as they can these technology like distributed ledger technology, which is used in case of blockchain or cryptocurrency, tokenization, as well as digital currencies, which will reduce all these problems which I have just mentioned. So till now, if I talk about the progress, the G20 roadmap for cross-border payment was launched in 2020. Its objectives were fast, cheap, more transparent, more accessible. लेकिन अभी तक की जो हालत है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है. And according to the Financial Stability Board Progress Report, several foundational initiatives under the roadmap have been already completed. For example, जो standardization है ISO द्वारा दिए गए थे, those standards they have been harmonized, they have been made uniform. Improvement in the operating hours, they have been done. Measures to reduce data related frictions have been done. Efforts to create equal opportunities have been done, and updated anti money laundering and टेररिस्ट फंडिंग काउंटर्स हैव आल्सो बीन डन. तो ये अभी तक एक इनिशिएटिव हुआ है. तो इसमें बस आपको इतना याद रखना, अगर मैं कहूँ फेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि G20 का क्या एम था, और ये तीन प्रॉब्लम्स के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन. अब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस दे आर स्लोअर देन एक्सपेक्टेड, या मैं ये कहूँ कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन की डेवलपमेंट है इट इज स्लोअर देन एक्सपेक्टेड. द रीजन इज कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म, uneven private sector participation, geopolitical tension जो अभी चल रही है, inefficient capital control, lack of transparency, inoperability and limited competition in some markets. These are the reasons जिसकी वजह से उतनी तेजी से हमें वो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन फेज 1 प्लस फेज 2 में आने के चांसेस हैं. पहला क्वेश्चन कि सर आरबीआई ने अभी तक क्या इनिशिएटिव्स लिए टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन. तो फर्स्ट इज
Guidelines to facilitate faster cross-border inward payments on October 29, 2025, जो कि एक ड्राफ्ट आया, फिर उस ड्राफ्ट को आरबीआई ने फाइनल गाइडलाइंस के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया ऑन 9th ऑफ अप्रैल 2026। इफ यू रिमेंबर, ये हमने डिस्कस किया, यू कैन गो बैक एंड चेक, द वीडियो इज अवेलेबल, जिसमें आरबीआई ने बहुत क्लियरली कहा रिगार्डिंग ऑल दी steps which is need to be taken by the banks involved in order to decrease the settlement time. Another major challenge in the cross-border is lack of transparency. So RBI has issued a draft disclosure of transaction cost for foreign exchange transaction on December 9, 2025, लेकिन अभी तक इस पे कोई फाइनल गाइडलाइंस प्रेजेंट नहीं हुई है। लेकिन उसमें प्रपोज किया गया, द ऑथराइज्ड डीलर वुड बी रिक्वायर्ड टू क्लियरली डिस्क्लोज देयर टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट टू द कस्टमर बिफोर एंटरिंग इनटू द फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ताकि कस्टमर को पता हो कि भैया जो मैं पे कर रहा हूँ वो क्यों पे कर रहा हूँ और उस चार्जेस के पीछे क्या लॉजिक है। Authorized dealers are banks, we all know that, which are regulated under FEMA. We have studied a number of times. RBI is also promoting international collaboration. We all know that, and this collaboration has been done. If I talk about the major initiative is interlinking of UPI with fast payment system of other countries. Fast payment system of other countries means in 2023 February, India's UPI was connected with Singapore's Pay Now system. They were linked and it enabled cross-border transfers between the users of both countries. At present, UPI QR code payments are operational in Bhutan, France, Mauritius, Nepal, Qatar, Singapore, Sri Lanka, as well as UAE. So that means India is doing really very well in terms of this, कि अगर हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिशनल ट्रांजेक्शंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है उसी को कनेक्ट करके वी शुड ओवरकम द इश्यूज विच आर प्रिवेलिंग विद द सेम। फिर उसके बाद पेमेंट एग्रीगेटर, अब आरबीआई हैज अलाउड द पेमेंट एग्रीगेटर्स to involve in the cross-border transactions as well. And these are the non-bank entities which provide cross-border e-commerce payments for the merchants. अब इसमें आरबीआई की डायरेक्शन आई थी 15 सितंबर 2025, जिसमें आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स कहे थे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट इज क्रॉस बॉर्डर payment aggregator must have a minimum net worth of 15 crores while applying. Their net worth increased to 25 crores by the third financial year. Inward and outward funds cannot be mixed together. Inward के लिए different account, outward के लिए different account. शायद जब मैं बोल रहा हूँ जिसने क्लास ली होगी उसको याद आ रहा होगा। Maximum transaction value capped at 25 lakhs per transaction and simply responsible for onboarding and completing the transaction. तो ये part for phase 1 is very important. यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फेज 1 में बन सकता है। अब उसके बाद टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं कहूँगा सिर्फ पढ़ लेना, इसमें बस आपको पता होना चाहिए टेक्नोलॉजिकल innovations में the first part is DLT, that is distributed ledger technology, and the second one is tokenization. इसमें एक रेफरेंस इन्होंने दी थी for stable coins and the risk related to stable coins. It's basically a type of cryptocurrency. तो इस पे जो डिटेल है वो आप पढ़ लेना, मैंने बस आपके रेफरेंस के लिए दिया जस्ट टू रीड नॉट टू रिमेंबर एनीथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि सर किसी भी मॉनेटरी सिस्टम को स्ट्रांग होने के लिए क्या चीजें चाहिए। अगेन आई वुड से दिस इज इंपॉर्टेंट, दीज आर दी थ्री थिंग्स विच यू मस्ट नो और विच मस्ट बी present in a system, then only we can call it as a strong system. This has been mentioned with respect to stable coin. Tokenization का करंट स्टेटस क्या है और उसके साथ साथ क्वांटम कंप्यूटिंग एंड पेमेंट सिक्योरिटी का करंट स्टेटस एंड पेमेंट प्री वैलिडेशन। मैं समझा भी सकता था लेकिन अगर मैं समझाने जाऊंगा तो बहुत टेक्निकलिटीज है, आप पढ़ोगे तो आपको जितना बेसिक सीधी सीधी बात समझ आएगी बस उतनी आपको याद रखनी है, रेस्ट यू कैन इग्नोर। ठीक है जी, अब आता है कि जो हमने डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की है, तो हमारे पास CCIL operated system, RTGS, AEPS, IMPS, NACH, NEFT, UPI, BEAM, NACH, that is National Automated Clearing House, credit card, debit card, prepaid payment transactions, then NETC, outstanding PPI insurance wallets and outstanding PPI insurance cards. तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें अगर आप मुझसे पूछो क्या याद करें, देखो यार आरबीआई ये वॉल्यूम और वैल्यू तो कभी नहीं पूछेगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि विच ऑर्गेनाइजेशन और विच टाइप इज ऑन द फर्स्ट रैंक, विच इज ऑन द लास्ट रैंक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, और उसके साथ साथ इनके थोड़े से फीचर्स ये आप जरूर पढ़िएगा।
तो पहले तो आप डेटा को देखकर, फैक्ट्स, ये फिगर्स को देख के आइडेंटिफाई कर लेना रैंक 1 पे और रैंक 2 पे और रैंक लास्ट पे और सेकंड लास्ट पे कौन है। उसके अलावा जस्ट रीड द फीचर्स विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट, द टास्क इज डन। इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने में एक बार फिर से आपको जब रिवाइज करोगे तो 2 आवर्स लगेंगे, बट दैट्स वर्दी इनफ। डू इन्वेस्ट इट, क्योंकि इन द एग्जामिनेशन यू कैन श्योरली एक्सपेक्ट 1 और 2 क्वेश्चन इन द फेज 1 ओनली, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन फेज 2 में आने के चांसेस हैं। इसके बाद अगर कोई रिपोर्ट आती है जून में तो फिर उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट काफ़ी पहले आ चुकी है तो इसके चांसेस ब्राइट है। गो विद इट। कोई डाउट होगा, डू टाइप इन द कमेंट सेक्शन बिलो। देयर वाज सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से मैं क्लास लाइव नहीं ले पा रहा था, इसलिए आई हैव गिवन यू द रिकॉर्डिंग सो दैट दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैच यू सून। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, गॉड ब्लेस यू।